थीसिस डॉक्यूमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है ना जिसको दो लोग पढ़ते हैं, लिखता है और एक जो अप्रूव करता है। ठीक है, मेरा थीसिस टॉपिक था कि गो टू द विलेजेस, रूरल एरिया एंड सी कोरिलेशन बिटवीन थ्रोट कैंसर एंड द न्यूट्रिशन, राइट। सो रूरल एरियाज में जब हम जाते हैं थ्रोट कैंसर देखने तो लिटरली लोगों का बोलते हैं आ बोलो और देखते हैं जुबां केसरी, दाने दाने में है केसर का दाना। ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಬರಮ್ಮ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಮ್ಮ. ಆ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಆ ಈ ಹೇಳಿ, ಆ ಈ ಇರಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಲೈನಿಗೆ ಬಾಮ್ಮ. And even in today's age, do you know how we examine the throat? We actually take a thin long mirror. एक ऐसा स्पून जैसा होता है, एक तरफ मिरर होता है, we hold the tongue और जुबां केसरी का मस्त इफेक्ट भी आता है. Then we put this mirror inside, ठीक है? And in that fogging mirror, with a headlight, with the मानिक चंद, we have to see the voice box. Like literally एक सेकंड के लिए भी दिखता भी है तो हम बोलते हैं हाँ दिख गया, you know? It's easier to see the moon in Karwa Chauth than to see that vocal cord. ಮುಷ್ಟಿಲ್ से दिखता है वो. ಆಯ್ತು ಗುರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಾತ್ರಿ 3 ದಿನ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಆರಾಮ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಓ ಬಾರಮ್ಮ, ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೋ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಬಾಮ್ಮ, ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಾಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಬಾಮ್ಮ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಬಾಮ್ಮ, ಹೋಗಮ್ಮ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಆಚೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಜಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು, ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಆಯ್ತು, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. हाँ ब्रिजेश. अरे वो महान आत्मा द ग्रेट जूलियस सीजर. कब? सर. अरे भैया कब होंगे आपके दर्शन? So Brijesh was the director of my play called छुरा मारा सीजरवा को. ये जूलियस सीजर का भोजपुरी अडेप्शन था. Like honestly मुझे मजा तो बहुत आता है एक्टिंग करने में, but you know you have to multitask and it's very difficult to multitask between doctor life and theater life, right? Forget the whole multitasking for rehearsals. उसका फोन लेते समय भी मेरे को मल्टीटास्क करना पड़ता था. यार मैं पेशेंट के साथ हूँ यार. अरे भाई कभी तो इस कनीज को अपने दर्शन करा दीजिए. पूरी कायनात बैठी ही आपके इंतजार में और आप लगे हुए हैं काटने में. हमको तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप अपना काट रहे हैं हमारा काट रहे हैं. सर हमें हिंदी आती है बस. भाई हमको कभी कभी तो ये समझ में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम इस प्ले के हीरो हो कि विलेन हो. अरे भाई प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ. क्या बताएं सर, गले में बहुत दर्द है. अरे पिछले 2 हफ्ते से तुम रिहर्सल पे नहीं आए हो भाई. कुछ भी बोलते हैं तो आवाज फट जाती है. रोज रोज नया नया बहाना बना देते हो. तुमको तो पता है वो प्रोड्यूसर ने पैसा देना बंद कर दिया. क्या ये कब हुआ? 1 महीने से शुरू हुआ है साहब. भैया पिछले 1 महीने से प्रोडक्शन का खर्चा अपनी जेब से उठा रहे हैं. हल्का सा बुखार हुआ था. समझे तुम? और गले में खराश. भाई एक विनती है, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कल किसी भी तरह कॉस्ट्यूम का फाइनल ड्रेस रिहर्सल में आ जाओ भाई. तभी से ये परेशानी है. यार अरे थोड़ी देर बोलना बंद करो यार. एक हफ्ते अगर शांत रहोगे ना तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी वैसे ही ठीक हो जाएगी. मैं करता हूँ यार कुछ. ठीक है हाँ. तो एक बार मैं एक रूरल पोस्टिंग में गया था एंड मेरे साथ एक सीनियर रेजिडेंट आ गया था. ठीक है, एज यूजुअल सीनियर्स का काम है जूनियर्स की उंगली करना. ठीक है. तो मैं एक पेशेंट देख रहा हूँ, वो दूसरा पेशेंट देख रहा है, बोला जगदीश कम हियर, शो मी योर फाइंडिंग्स.
आई एम लाइक इधर तो मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा था, इधर क्या मुझे समझ में आएगा। तो मैं उसके पेशेंट का वो जुबान केसरी करके मैं देख रहा हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो माई फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी व्हेनेवर अ सीनियर आस्क्स यू सम क्वेश्चन से द मोस्ट सेफेस्ट आंसर। तो मैं बोला सर ये पेशेंट नॉर्मल है, क्योंकि ऊपर वाला ना बैलेंस रखता है। तो मेरा सीनियर बोलता है थैंक गॉड जगदीश यू कुड मेक आउट समथिंग, आई कुडंट मेक आउट एनीथिंग माई सेल्फ। तब मुझे समझ में आया यार दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। हम लोग तैयार होके आते हैं, हमें पेशेंट्स को देखने का मतलब लाइक वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। एंड वो क्या है, वो जुबान केसरी के इफेक्ट से और स्वदेश मूवी रिलीज हुई थी, सो आई गॉट वेरी इफेक्टेड। लाइक देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, मैं देश के लिए, यू नो, आई फेल्ट दैट राइट। सो इन दैट इफेक्ट आई वेंट एंड डिड समथिंग दैट मोस्ट पीपल वुड नॉट डू। आई वेंट टू माई बॉस, माई एंग्री बॉस। Ma'am, may I come in, ma'am? Yes, Jagdish. Ma'am, I visited the camp today and I had a concern. Tell me. Ma'am, we are struggling to examine patients' throats in the camp because we are using the mirrors and we can't see minute lesions in the mirror, ma'am. But here we have these high-end endoscopy systems. So? Ma'am, can we not have something like this in the rural area? And I was like, ma'am, हम लोग उधर रूरल कैंप में मिरर विरर डालते हैं, हमें वोकल कॉर्ड को ढंग से दिखता नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल में 3 चिप कैमरा, हाई डेफिनेशन लाइट, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, यहाँ पर जब तक पेशेंट आता है तब तक कैंसर दूर से दिखता है। हमें ऐसी चीज रूरल एरिया में चाहिए, वहां पर हमको अर्ली डायग्नोसिस करना है, अर्ली लीजन पिक करना है उन लोगों में। सो शी थिंक्स फॉर सम टाइम, शी लुक्स डाउन, शी लुक्स अप टू मी एंड शी इज लाइक जगदीश तू भौंकने वाला कुत्ता है कि काटने वाला कुत्ता है? आई एम लाइक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट आंसर करना पड़ेगा, थीसिस गाइड है। सो आई एम लाइक मैम मैं काटने वाला कुत्ता हूं। शी इज लाइक तो फिर भौंक क्यों रहा है? तो भौंकने की आवाज आ रही है, कमिंग एट द एंड ऑफ द ओपीडी, बाबा इधर क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं? If you want to do something about it, who's stopping you from doing it? एंड आई एम लाइक अपनी सैलरी 9,000 रुपए, लाइक कैसे करेंगे? Ma'am, I don't mean to be disrespectful, but I can't shift an endoscopy system from here to there without your permission, no, ma'am. No, Jagdish. That's not practical at all. Why don't you learn to use the mirrors more effectively? Right, ma'am. Look, I don't want to discourage you. In fact, I'm very happy that you're thinking about something. Think about something that you can use where there is no electricity and no manpower. Yes, ma'am. We'll discuss this next week again. Sure, ma'am. Thank you. Jagdish, Yes, ma'am. all the best for your play tomorrow. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's very good that you're keeping your passion alive. Keep it up. Thanks a lot, ma'am. Yeah. Yeah, I'd like to say something about my boss. However strict she is, दिल की बहुत अच्छी है। लाइक मेरे जितने भी रिसर्च और इनोवेशन या एक्टिंग क्रिएटिव आइडियाज है सबको सपोर्ट करती थी। आई जस्ट विश एवरीवन एल्स इन द डिपार्टमेंट वाज जस्ट एज सपोर्टिव। यू नो हु? So send me that reports once it comes, okay? Sure, sir. Where's Jagdish? Why is he not here for rounds? Sir, he's meeting with Dr. Kavita for something. And you are left covering up for him. What about last night? Wasn't he on duty last night? Sir, I was on duty. Dr. Manjunath, what's wrong with you? You're so tired. You please go home and take rest after rounds. Huh? If anybody asks, tell them I gave you permission. Sir, but I am on duty today also. This is so ridiculous. Do one thing. Call him. Call him right now. Call him right now. Go. Sir. No. Call him. Call him. Go and make the call. यार इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को रिहर्सल्स के लिए फ्री किया था, बट उस वेंकी के बच्चे ने ऐसा पीआर किया। He made Manja call me and ask me to do the night duty that night. हाँ बोल। ओ आर ठीक।
चेंज ಇಲ್ಲ ಸರ್. Sir, I have told him. Ah, good. Remember one thing. Work for yourself. He is a chalu fellow. He will do this and that and make all kinds of things and take all the credit. As for you, you will be stuck caught in all this mess. Okay? Now go home and take rest. Huh? Okay, sir. Ah. Yeah, that was a very difficult duty for me. Like literally सबसे difficult part था to tell ब्रिजेश कि मैं नहीं आ पाया रिहर्सल पे क्योंकि ड्यूटी आ गई थी लास्ट मिनट. अरे जगदीश भाई, अरे क्या हाल है भाई, कहाँ है तू? हेलो. जल्दी जल्दी आ जा यार, सेट रेडी है, कॉस्ट्यूम रेडी है, सब लोग आ गए, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है. चलो चलो जल्दी आ जाओ. ब्रिजेश भाई मेरी पूरी बात तो सुन लो. अच्छा हाँ बोलिए. यार मैं ना कल रिहर्सल्स पे नहीं आ पाऊंगा यार. अरे यार तुम्हारा ना ये रोज रोज का टंटा है भाई. अरे क्या हुआ ना, मैंने जो ड्यूटी एक्सचेंज की थी ना वो कैंसिल हो गई, तो मैं डायरेक्टली शो पर ही आ पाऊंगा भाई. हेलो ब्रिजेश. अरे भाई आई एम जस्ट किडिंग यार. मैं मजाक कर रहा हूँ. तुम तो साला कुत्ता कमीना हो यार, जान निकाल दिए थे हमारा भाई. चलो ठीक है, एक काम करो, कल शाम को आना 7 बजे रंगशाला में, मिलते हैं. ठीक है? ऑलराइट, बाय. बिल्कुल मिलते हैं. ठीक है. ओके बाय. If you want to tell something that hurts people, but you don't want them to get hurt afterwards, you know, there is a secret power to say that. You know what are the 2 words? They're called just kidding. आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके बाद just kidding बोल के वो रिवर्स हो जाता है. Literally like God mode, you know, right? और just kidding के पहले जो आता है, वो normally एक कड़वा सच होता है. Like you're never going to say someone, hey, you look so beautiful. Just kidding. नहीं ऐसा नहीं आएगा. कड़वा सच आना चाहिए, right? Like something that you don't want to say. Like one day I was in the lift and one of my colleagues, she entered the lift and I was like, "Acha, she's this." I was like, "Congratulations, how many months?" She's like, "What?" I'm like, "Just kidding." बच गए. Just kidding बचाता है आपको. हाँ ब्रजेश, फाइनली मैं आ रहा हूँ यार 30 मिनट्स में. आई हैव मेड ऑल सेटिंग्स. हाँ आ रहा हूँ. सिस्टर रजिस्टर. Bro. हाँ. Strider casing emergency. What? Oh shit. Okay, do one thing. Go call Dr. Venkatramappa on the phone and you go to the OT. I'll just shift the patient and come. Huh? Oh God. Out of all our ENT cases, this was the most dangerous and something that is an emergency. It's called stridor. You know, stridor is a situation where you cannot breathe. Something is blocking your airway, and patient is in distress. We have to do a surgery called tracheostomy, where you make a hole in the neck and try and give a artificial airway so that the patient can breathe. I know I had to go for rehearsals, but as a doctor, work comes first. So I had zero regrets, but had to save this patient's life. Brother, get the tracheostomy kit ready. Yeah? Yeah, quickly. Potex size 8.5 mm tube. Yeah? Jagdish, check cuff and apply xylocaine jelly on the tube. Yeah? Alright. Size 12 blade. And Daddy's forceps. Hold the tube ready. Tube ready, sir. Yeah? Okay. Now just carefully put the tube in when I tell you to. Yeah? Yes, sir. And watch out for false airway. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, now put it in. Yes, Watch the tip enter. Yes, sir. Yeah? Is it fine? Yes, Yeah? sir. Okay. Please check for false airway. Bilateral chest is clear. Saturation up to 99%. Thanks to Dr. Venkatramappa, this is the quickest trek that I've ever seen. Patient was also very cooperative in spite of being in such a distressing situation. Mr. Appachan, ella sheriyana ketto? Huh? You're all right. Nada wadlaki matam. Don't worry, you're fine. You're out of danger now. Yeah, whatever said and done, na, Venky was a brilliant surgeon, life-saving surgeon. अगर बस वो थोड़ा दिल का अच्छा होता ना तो बंदा सही निकल जाता. Yes, sir. I want an X-ray, chest, PA view. Okay.
sister consultation form. And tonight he can stay in the OP room. Yes, sir. Tomorrow you shift him to the ward. Right, sir. Thank you, sister. Dr. Jagdish, Yes, sir. good job. Thank you, sir. हेलो ब्रजेश, यार मैं सच बता रहा हूँ, निकलने वाला था यार, इमरजेंसी केस आ गया। इमरजेंसी था, इमीडिएटली ओटी में ले जाना पड़ा यार। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कल मैं परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा यार। दोस्त, मेरे भाई, यार तू मेरे पे ना एक फेवर कर, आज के बाद ना मेरे साथ कभी काम मत करना तू। भाई ऐसा मत बोल यार, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था यार, इमरजेंसी केस था। अरे सुन भाई, ये लास्ट टाइम है, कल आ सके तो ठीक है, नहीं तो शो कैंसिल कर देंगे, ठीक है? अरे वेरी सॉरी यार, वेरी। हेलो Bro, that track patient has gone blue. Huh? Looks like cyanosis come. What? So cyanosis is a condition where because of lack of oxygen in the blood, your lips, tips of the fingers, toes, they become blue. हम लोग इस पेशेंट को देखने गए थे, तो पेशेंट तो कंफर्टेबल था, हाँ लिप्स और फिंगर्स ब्लू थे, but we could not figure out because ECG was normal, heart rate was normal, oxygen was normal. I'm like, problem क्या है? So we called Dr. Venky, and Dr. Venky comes and he notices one thing. He says, lips are blue, fingers are blue, toes are not blue. मतलब कुछ तो गड़बड़ है. So he's like, patient कहाँ से आया था इसके पहले? बोला bathroom से. So he goes into the bathroom, and from the bathroom he takes a wet blue color imparting towel and throws it on my face, and my face became blue. It was the cheap color of the towel that was imparting the color. बड़ी मुश्किल से रेस्पेक्ट ली थी मैंने वेंकी से, अब वो भी चले गई, बल्कि बहुत गाली पड़ी मेरे को। Jagdish, use your common sense, Jagdish. What is this? You are supposed to teach your interns, and yet, very disappointing. You are supposed to, instead of doing your theaters and all that, at least learn to be a doctor first. Huh? Has the dean come? No, sir. Should be here in 5-10 minutes. Have you got the CCTV footage? Yes, sir. In this pen drive. Good. This should get us some justice now. यार, when they say justice is blind, तो ऐसा काला पट्टी क्यों डालते हैं गांधारी की तरह?